टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी और मुझे यही नहीं पता है कि व्हाट रिप्रेजेंट्स कि वीनस है या मरकरी है या व्हाट इज इट थोड़ा इट्स प्रॉब्लमेटिक सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर आप अगर ये चीज ऑल्दो इट्स नॉट अ सजेशन कि आप भूल जाओ दैट ओके दिस 5 इफ somebody forgets that okay ये 8 से अष्ट धातु अपन डिनोट कर रहे थे whatever Vedic references religious references और भारतीय references that we were having in the pre-contest of numerology अगर वो आपके ध्यान में ना भी रहे तो it is completely okay but from the moment we discussed about okay this number represents this planet now this is about personality number this thing is related to destiny number how it is calculated these are the number orientation you must be remembering that टाइम लग सकता है दैट आई एक्सेप्ट इट यू मे नीड दैट टाइम यू नीड दैट अगेन अगेन प्रैक्टिस होता चले तो इट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड कि अच्छा ये नंबर आता है ये नंबर इधर आता है ग्रिड में ठीक है बट वो चीज आपको ध्यान में होना चाहिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच नंबर फ्रॉम 1 to 9 सारा नहीं हो पाएगा बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर 1 2 3 4 5 अप टू 9 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट what predictions we can give on that basis क्या ऐसी बातें हैं जो हम आप उनके बारे में सकते हैं on the basis of their numbers although in your notes the very first topic is personality and then under it it is written if somebody is having personality number 1 if somebody is having personality number 2 but I'm just giving one clarity over here it's not only about personality number 1 जो भी चीज पर है it is about number 1 it is about someone who is being governed by sun personality number यहाँ क्यों ऐड किया गया है because there can be different numbers in our life but two numbers are find more dominant जिसका presence बहुत impact ज्यादा हमारे आपके ऊपर in the last class that we discussed personality number and destiny जैसे apart from the personality and destiny number one can have maybe किसी person का personality number is 1 destiny number is 6 ऐसा थोड़ी कि उसके ग्रिड में सिर्फ 1 and 6 होगा there may be different other numbers that person may be having 5 and his or her that person may be having 3 and 7 हो सकता है ये सारी चीजें हो सकती है बट अगर बोले कि अच्छा जितने भी नंबर इनके which number is dominant सबसे ज्यादा बोलेंगे this and this so that's why we are terming it as personality number 1 but deep down we must understand that ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं it is about number 1 it is about number 2 it is about number 3 ठीक है very first thing is personality number 1 there may be various things that would be contradictory there may be various things that somebody is unable to relate but this is only the very first topic that we are going to deal with in terms of prediction in terms of how we are going to read someone's lucid grid अभी बहुत कुछ आगे है that we are required to understand for example arrows that of arrows और वो arrows का impact may be different from what we are studying in personality there may be one story which is saying for example there is a prediction of a similar of the same person एक prediction ये कहता है कि this person will attain higher education same person's grid एक ऐसा combination है which is there will be obstacles in his or her education उस केस में क्या करेंगे how we are going to interpret that story एक ही person का grid है इसमें दोनों बातें how we are going to read it interpret it or if there are something completely opposite कि I'm going to read about personality number 4 and whatever things are written there when I'm seeing the actual person who is being governed by number 4 मैं देखता हूँ यार ये बातें तो उनसे मैच कर नहीं रही what could be the possible reasons that will be answered with the help of repetition of numbers missing numbers and various other things तो ये जो हम आप इसमें थोड़ी बहुत चीजें आएंगी ये ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है just assume not assume this is one of the fact that this is one of the parameter not everything but it is also important within so starting with personality number 1 so as we have studied in previous class ki number 1 is governed by the planet sun so this must be repeated again and again so that आपके mind में by default वो enter कर जाए then we studied okay there is a word that we can attach with this particular number that is king तो ये king अपने आप में कोई ऐसा वैल्यू नहीं रखा okay ये कहीं जाएंगे कहीं के राजा बन जाएंगे ब्रिटेन राजा बन जाएंगे बेसिकली these words are only with respect to every planet वो सिर्फ ये explain करते थे there are certain things that we can connect with this word so what are those things so we discussed that okay this person will be having the quality of leadership थोड़ा बहुत here and there का conversation which is required to understand certain things अब leadership का मतलब हमें आपको ये समझ आता है for example if we are going to talk about prime minister he is the leader of कंप्लीट यानी बोल सकते हैं कि जो भी हम आप अपनी कंट्री की पॉपुलेशन मानते हैं whether somebody voted for him or not but we consider कि okay currently he is the leader क्या मैं भी अगर नंबर 1 से गवर्न होता हूँ if I'm being governed by number 1 should I expect कि मेरे अंदर भी 140 करोड़ लोग हैं no because I'm not working on the similar stage maybe I'm working in an office which is having a employee size of 150 people मैं उसमें एक टीम लीडर हूँ मैं उसमें एक मैनेजर हूँ तो मे बी मेरे अंदर there are 10 employees 25 employees or 50 employees
आई एम लीडर ऑफ दैट पर्सन. सो लीडरशिप में ये अपन डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि और सी इज द लीडर ऑफ 5%, 500% और 5 लाख. वो डिफाइन नहीं हो रहा. बट दिस पर्सन विल बी हैविंग दिस क्वालिटी. ठीक है, यानी इफ गिवन अ चांस, अगर खुद से वो चांस नहीं लिया बट दे आर गिवन दैट चांस, तो दे विल प्रूव टू बी अ गुड लीडर. ठीक है, इनके अंदर वो इनहेरिटेड क्वालिटी होगी. इसलिए कई बार एक लाइटर नोट पे ये कह देते हैं, कहीं ना दिखे इनकी लीडरशिप, एटलीस्ट वहां उनकी चलता, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिव इम्पैक्ट दिखाते हो. सो दीज थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड विद दीज एग्जांपल्स. देन जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, एक्चुअली दे लाइक टू प्ले ऑन फ्रंट फुट. आगे रहना चाहते हैं, आगे रहना चाहते हैं. जो आगे रहना चाहेंगे, दे लव ऑर्डर्स, so they will be having that nature. Then जो leader है, they will not like if somebody is oppressing them. ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ. Everything is written in your notes. The parts that are not mentioned in your notes, मैं आपको बता दूंगा कि ये अब मैं ऐसे कुछ भी नहीं लिखूं. So जो चीजें लिखी हुई मैं कोशिश ये करूंगा कि whatever is written, अगर मैं उसी को रीड करके बताऊं, no fun at all. तो जो ऐसा रैंडम चीज है, maybe it's not in sequence or whatever, उससे नहीं आएगी. Go through the notes, you will get it. जो चीजें नहीं लिखी होगी, I will tell you that okay, please write. फिर भी अगर आपको नोट्स मेकिंग की आदत है, you can write it. अब ये सारी चीज होगी. एक सप्रेस करना इनको मुश्किल होगा. नेक्स्ट, दे डू नॉट लाइक टू फॉलो अदर ऑर्डर्स, दे लाइक टू गिव ऑर्डर्स. वेरी सिंपल थिंग. नेक्स्ट, नाउ देयर इज वन थिंग. ऐसा लोगों के मन में आता है कि ओके, दे विल नॉट लिसन टू अदर्स. मे बी it is case dependent. They may not listen to others, but mostly what we are going to say that they do not like interference. ये it will be a better word. एक होता है कि मान लो अभी हम सब we all are in the class and right now I'm saying something and somebody is waiting that okay, when this person will stop speaking, I have to share something with him or her or with the entire class. कुछ होंगे जो बीच में आ जाएंगे. ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल है, आप बीच में क्लास में आ सकते हो. दैट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. कोई बीच में आ जाएंगे, तो मान लेते हैं मैं वन का हूं, कुछ कह रहा हूँ, सो आई एम डिक्टेटिंग यू समथिंग. बीच में जो ये घुसा है, आई विल डिसलाइक दैट क्वालिटी. तो ये इंटरफ्रेंस इन ना ही अब बोलने के टाइम पसंद आएगा, ना ही इन देयर वर्क स्टाइल. So maybe they are having a definite way, they are having a certain way to work. If somebody is getting, अच्छा ऐसा करो ना, do not do this like this, इसको ऐसा करो, they dislike that particular thing. Again, it is related to order giving. इनको आदत नहीं है उस चीज. This is one of the thing, they do not like interference. So this will be a better suitable word rather than कि इनको सुनना नहीं, if it is said in a proper manner. जैसे कि सीरियल्स में देखो आप, है ना, पहले राजा जी को सलाम वलाम ठोके बोलना है, ये खबर लाए हैं. सो दैट शुड बी द आइडियल प्रोटोकॉल और पैटर्न. सो ये सारी चीज है. नेक्स्ट थिंग इज गुस्सा होगा एंड मे बी वो जल्दी आ जाए. सो दैट फ्रीक्वेंसी में बी वेरी क्विक, बहुत जल्दी आने की चीज. गुस्सा विल बी एसोसिएटेड विद टू ऑफ द नंबर्स. थोड़ा बहुत कोरिलेशन कर, भले ही हमने वो पढ़ा हो ना पढ़ा. प्राइमरली टू नंबर्स. इट कैन बी इन ईच एंड एवरी नंबर. ऐसा नहीं है कि आई एम इफ आई एम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू नंबर 2 तो मेरे अंदर गुस्सा नहीं हो. गुस्सा इज वेरी बेसिक थिंग, वेरी जनरल थिंग. एवरीबॉडी विल बी हैविंग, बट यू विल फिगर आउट वन. एक पर्सन है जिसको छोटी बात को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर, द वर्ड दैट वी यूज. देन देयर आर सर्टेन पर्सन हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्टैमिना. बोलो, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड, इट इज नॉट अफेक्टिंग मी. बट एक बार जब वो फटते हैं तो फिर धमाका है. ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट. 1 and 9, remember this, 1 and 9, these are the two numbers who will be having, you can say that short tempered का issue है, और जल्दी जल्दी गुस्सा छोटी छोटी बातों. और if somebody is not following their words, they may get angry. So 1 and 9, these are two numbers जिसको गुस्सा का issue रहेगा. जिसमें 9 थोड़ा और हो जाए because of the planet's nature. Planet's nature क्या है? 9 is governed by Mars. Mars is said to be red hot fierce planet. The red hot fierce है, तो उस पर्सन में भी वो नेचर आ रहा है. नेचर आ रहा है तो टेम्पर्ड है, थोड़ा बहुत बीच बीच में दूसरे नंबर का.